Good morning. Welcome back to Angrezi Medium. Let us quickly start with the idioms for today. The first one is birds of a feather flock together. This means that people of the same sort or with the same taste and interest will be found together. एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग ज़्यादातर साथ पाए जाते हैं. For example, Tom and Harry are always seen together just as the birds of a feather flock together. टॉम और हैरी हमेशा साथ दिखते हैं क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, एक नेचर के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. Birds of a feather flock together. Next is bite off more than you can chew. This expression is used when we take on a commitment that we are unable to fulfill. We are not capable of fulfilling it. When we try to do something that is too difficult for us to do. अपनी capability से ज़्यादा करने की कोशिश करना. For example, by accepting 2 part-time jobs, he is clearly biting off more than he can chew. दो पार्ट टाइम जॉब्स लेकर वो ठीक नहीं कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम अपने सर ले रहा है. ही इज़ बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू. नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस. To break the ice means to make somebody feel relaxed and comfortable. To break down a social stiffness in order to be familiar with each other. एक दूसरे से घुलना मिलना, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना, इसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑर्गेनाइज्ड अ फ्यू पार्टी गेम्स टू ब्रेक द आइस व्हेन पीपल फर्स्ट अराइव्ड. उसने पार्टी के बिगनिंग में ही कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज किए जिससे लोग आपस में फेमिलियर हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. By the skin of one's teeth means by a very narrow margin. When you barely do something, you only just succeeded in doing it. किसी चीज़ का एकदम मार्जिन पे कंप्लीट होना. For example, we managed to complete the project on time by the skin of our teeth. हमने अपना प्रोजेक्ट एकदम एंड पॉइंट पे, एंड मोमेंट पे कंप्लीट किया. मीन्स by the skin of our teeth. The last one for today is comparing apples to oranges. This expression is used when we are trying to compare two such things whose comparison is not practically possible. जब हम ऐसी चीज़ों का comparison करते हैं जिनका comparison practically possible ही नहीं है, तब हम कहते हैं comparing apples to oranges. For example, to compare Italian food with Mexican food is like comparing apples to oranges. Means Italian food और Mexican food दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इनका कोई comparison possible ही नहीं है. अगर हम इनका comparison करते हैं तो it's just like comparing apples to oranges. So these were the idioms for today. Stay tuned and keep watching for more such videos. Thank you.